which covers everything about life. Intimate Note to the Sincere Seeker by Gurudev Sri Sri Ravi Shankar. Okay, so yes, now what we will do, पहले तो आई विल शेयर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, जब गुरुदेव ने ये शेयर किया वो मोमेंट कैसा था। जयपुर में महाशिवरात्रि का सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया गया था। गुरुदेव वाज देयर फॉर अबाउट 2 or 3 days। तो महाशिवरात्रि के दिन मतलब पता नहीं 1 लाख 2-3 लाख कितने लोग, मतलब वो ग्राउंड पे इतनी भीड़ थी, वो एंड दिख नहीं रहा था लोगों का। एंड बीच में मे बी टिल अबाउट 1/3 पार्ट ऑफ द ग्राउंड स्टेज से बाहर निकलता हुआ एक रैंप बनाया हुआ था और गुरुदेव उस पे चल रहे थे। सत्संग थोड़े भजन हो चुके थे एंड सनसेट वाज अबाउट टू हैपन। तो जैसे सूरज होराइजन के पास जाने लगता है तो वो एक अलग दृश्य होता है, वो कलर्स चेंज होने लगते हैं आसमान में। एंड गुरुदेव वाज स्टैंडिंग ऑन द रैंप, बैकग्राउंड में the sun changing its colors, the different colors coming in the sky. And I had recently purchased a very good Canon DSLR camera, और मैं उस रैंप के साइड से चलते चलते गुरुदेव के पिक्स ले रहा था। गुरुदेव एंड सन साथ में हो सकते हैं कि नहीं, ऐसे I was just taking pictures. And Gurudev was walking at first. So it was such a majestic walk. जिन्होंने देखा है उनको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। So that elegance, and जैसे it was like the divine has incarnated and showering his blessings on all of us. So it was a very, a very beautiful, magnificent and adbhut कह सकते हैं उसको। And then Gurudev started talking. And he said, कोई भी आपका गोल हो, कोई भी आपका उपक्रम हो, कोई भी आपने प्रोजेक्ट लिया हो, उसको यशस्वी बनाने के लिए 5 चीजों की जरूरत होती है। जैसे ही गुरुदेव ने ये सेंटेंस बोला अभी नाउ गुरुदेव इज गोइंग टू गिव द मंत्र फॉर सक्सेस। तो मेरा कैमरा एंगल जूम बूम, मेरा ना कैमरा ऐसे धीरे धीरे नीचे आ गया। बोला ये बात पहले सुन लेते कुछ तो पूरा इस लाइफ भर का कोई भी प्रोजेक्ट तुमने लिया हो, कोई भी उपक्रम लिया हो, कोई भी गोल आपको पूरा करना हो, उसको पूरा करने के लिए 5 चीजों की जरूरत। तो मैं समझ गया, यस दिस इज गोइंग टू बी अ फॉर्मूला फॉर माय लाइफ। तो कैमरा सब मैंने नीचे कर दिया और मैं बैठ गया नीचे, एंड जब पहले ये सुन लेते हैं, फोटोग्राफी बाद में हो जाएगी। तो क्या करें, बताए कि नहीं बताए? So if you want to know, type KNOW no। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं इसको। देखो आपको भी पता है मैं तो वैसे ही बताने वाला हूँ, राइट? बट there should be some way in which you should be involved ना। नो लिखोगे तो नॉलेज मिलेगा। KNOW no, not NO no। Okay, thank you all the participating enthusiasts। Very nice, very nice, great। First one he said, संकल्प। Second, साधन। Third, skill। Fourth, समय। Fifth, समर्पण। ये 5 एस से शुरू होते तो मुझे याद रखना अब बहुत इजी हो गया। All 5 words are from S। संकल्प, साधन, स्किल, समय, समर्पण। समर्पण के लिए गुरुदेव ने और 2 वर्ड्स भी यूज किए। He said कृपा, ग्रेस। समर्पण हो तभी तो कृपा
बरसती है ना। एंड फिर ऑफ कोर्स ही सेड स्किल के लिए ही यूज द वर्ड, तुम्हारे कर्मों में कुशलता होनी चाहिए। ओके, सो एंड देन ही एक्सप्लेन, अभी वो मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं है, बट देन आई हैव इम्प्लीमेंटेड दिस 5 पॉइंट फॉर्मूला इन माय लाइफ सेवरल टाइम्स आफ्टर दैट एंड इट हैज ऑलवेज वर्कड। तो क्या मुझे समझ में आया मेरे अनुभवों से, और जो गुरुदेव ने अलग अलग समय पर इन 5 पॉइंट्स के बारे में जो बातें की हैं, उस टॉक में very short he spoke, he gave these 5 bullet points and he spoke a few lines about these, but in his various other talks what he has spoken about these 5 aspects and what my learning is from my experiences of implementing these 5 points that I'm going to share with you. तो संकल्प जब हम करते हैं, हर कोई व्यक्ति संकल्प करता है, कुछ भी छोटा सा संकल्प होता है कि आज मुझे इस मॉल में जाना है, ये भी एक संकल्प ही है, इट्स अ डिसीजन। संकल्प इज एन इंटेंशन। सी, इच्छा और इंटेंशन, डिजायर, विश एंड इंटेंशन, इसमें अंतर है। इंटेंशन इज अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन विच you have decided you will do. Wish is, oh, I wish I can go to the mall someday, but I am going to the mall today. This is a sankalp. I wish I can go to Rishikesh and do the DSN with Salil Bhaiya and this wonderful team on the banks of the Ganga. This is a wish. I am going to Rishikesh to do the DSN. This is an intention. Wishes may or may not fulfill. Chances of intention getting fulfilled is much higher. Like one of you wrote, intention, attention, manifestation. Intention, उसके ऊपर आप आपके एफर्ट्स से अटेंशन दोगे और मन से फ्री रहोगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दिस अटेंशन। इंटेंशन फुलफिल कब होता है? इंटेंशन, अटेंशन, मैनिफेस्टेशन। व्हेन डज इट मैनिफेस्ट? Attention, that second stage is very important. So what is attention? Attention is with a free mind putting focused efforts is attention. संकल्प किया, उसके बाद उस पे एफर्ट डाला। तो जो सेकंड एंड थर्ड पॉइंट्स है ना गुरुदेव के फॉर्मूला में, साधन एंड स्किल, ये उस अटेंशन को रिलेटेड है। इनफैक्ट चारों, समय एंड समर्पण भी, आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू। अभी संकल्प क्या होता है? टिपिकली संकल्प हम करते हैं और फिर हमें देखो, एक हमारा ना इंट्यूटिव माइंड एक संकल्प करता है, oh yes, I have to go to Rishikesh for the DSC. Yes, 14th April to 17th April, perfect. या थोड़ा सा गड़बड़ है उस डेट पे, लेकिन नहीं, जाना है, पहुंचना है। अब क्या होता है आफ्टर 5 मिनट्स? नहीं, बट वो आई थिंक पहले मुझे थोड़ा और पैसा सेव करना चाहिए और फिर ही मुझे कुछ करना चाहिए। अभी क्या हो गया? इसको बोलते हैं विकल्प। विकल्प इज एनी अदर ऑप्शन टू द संकल्प इज विकल्प। ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस ऑफ योर संकल्प इज विकल्प। तो अभी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आ गया आपके दिमाग में। तो आई थिंक या मे बी विंटर में देख लेंगे, तब तक आई विल सेव सम मनी ऑल्सो। अच्छा, दूसरा विकल्प भी हो सकता है, अरे मैंने हैप्पीनेस प्रोग्राम किया, सुदर्शन क्रिया ही मैं नहीं कर रहा हूँ रोज, ये कोर्स करके क्या फायदा? पहले लेट मी मास्टर सुदर्शन क्रिया। 5 साल आई विल डू सुदर्शन क्रिया, आई विल बिकम अ मास्टर ऑफ सुदर्शन क्रिया, देन आई विल थिंक ऑफ डूइंग एनी अदर आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स। एक और विकल्प आ गया। ऑल दीज आर लॉजिकली वेरी नाइस, दे मेक परफेक्ट लॉजिकल सेंस, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो, आप ही एक्सप्लेन, आपका इंटेलिजेंट माइंड ही एक्सप्लेनेशन दे रहा है इसके लिए। तो ये सब क्या करते हैं? विकल्प आपके संकल्प को कमजोर करते हैं।
So once Gurudeva was asked in another Mahasatsang, this was in Mumbai. From Jaipur we moved to Mumbai now. Gurudev was asked, Gurudev, संकल्प की शक्ति को कैसे बढ़ाएं? He answered only one word. He answered only one word, samarpan. Like somebody has written in the chat, let go of the sankalp. संकल्प की शक्ति को समर्पण से बढ़ा सकते हैं. तो इसके लिए क्या होना चाहिए? Trust. You should have faith. Trust is essential. And if you have seen the Love Moves the World video, one of the Love Moves the World video के बहुत सारे versions हैं. In one of the versions of that, Gurudev says, how to build trust. क्योंकि trust issues हर एक के life में आते हैं. How to build the trust. He says, satsang is that which builds trust. Satsang is that which builds trust. So satsang means what? Satsang is not just doing bhajans. Satsang, being in the company of truth, being in the knowledge, that builds trust. Because whenever you are not in the knowledge, that time negative thoughts will come and they will spoil your trust. This meeting is about the 5-point formula for achieving goals. When you are not in knowledge, you will get doubts more. And when will you not be in knowledge? When your prana shakti goes low. तो जब हमारी प्राण शक्ति घटने लगती है तो क्या होता है? हम नॉलेज से हट जाते हैं, सत्य से हट जाते हैं. जब नॉलेज से हट जाते हैं तो डाउट्स ज्यादा आने लगते हैं. जब डाउट्स ज्यादा आते हैं तो ट्रस्ट टूटने लगता है. जब ट्रस्ट टूटने लगता है तो हमारा संकल्प कमजोर होने लगता है. दिस इज अ साइकिल. लो प्राणा, आउट ऑफ नॉलेज, डाउट्स इंक्रीजिंग, ट्रस्ट वीकनिंग, संकल्प becoming weak. So if you want to keep your sankalpa strong, the attitude should be of samarpan, which Gurudev said. And what can you do to yourself? Increase your prana. If you are in a high prana state, see, children are in a high prana state. किसी छोटे बच्चे को आप क्वेश्चन पूछोगे, ये वहां जाना है? बोलेगा हाँ यस, इमीडिएटली यस निकलता है. लेकिन किसी बड़े व्यक्ति को पूछो वहां जाना है, अरे अभी थोड़ी देर के बाद देखते हैं. यस नहीं निकलता. स्पिरिचुअलिटी का वन वर्ड डेफिनेशन इज यस. You know, this was also very interesting event in a television panel interview. One of our very popular Art of Living teachers, Khurshid Batliwala, he was invited to speak in the panel. There were people from different streams. So Khurshid Batliwala was representing spirituality. तो ये दूसरे फील्ड से थे. तो हर एक को अपने फील्ड का वन लाइन डेफिनेशन देना था. आपके फील्ड का वन लाइन डेफिनेशन. तो उनको खुर्शीद बाटलीवाला, बाबा, मोर पॉपुलरली नोन एज बाबा, उनको पूछा, कैन यू डिफाइन स्पिरिचुअलिटी इन वन लाइन? He said yes. And then the interviewer was waiting for the definition. And the interviewer waited a few more seconds. And Baba just kept looking into his eyes. He again asked, can you define spirituality in one line? Baba said yes. Now the interviewer was waiting for the definition. And then he got it, that the answer is over. Definition of spirituality in one line, yes. It's not even one word. It is just one word, not even a line. That's the definition of spirituality, yes. आप सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप चेक करो कितने ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब आप इस यस माइंड में होते हो.
that if you are in yes mind for most time of your day, you are the most spiritual person. अगर आपके जीवन में आप मतलब पता नहीं ये कर रहे हो वो कर रहे हो, आपको लग रहा है आप सेवा कर रहे हो, आपको लग रहा है आप बड़ी बड़ी साधना कर रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, और अगर नो 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 आ रहा है आपके मन में, then that is not spirituality. So this is a parameter to check. Are you really spiritual? So yes, this is the first thing. Second point जो गुरुदेव ने बोला है, साधन. कोई भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक साधन की जरूरत होती है. अच्छा, जैसी अभी मैंने ये संकल्प के बारे में ये जो बताया, पहले तो आप लोग ऐसे करो. I spoke some 2-3 different aspects about sankalp, vikalp, doubts, trust, satsang, spirituality. Yes. What has appealed to you most and what has become your important takeaway? Write that 3-4 words in the chat. Welcome, Harshad ji. High prana and surrender. Shraddha, yes, mind. Keep prana high. Yes. Sankalp is enhanced samarpan. To have high prana, sankalp, trust, surrender, yes, mind. All high prana state. Yes, mind is the parameter to measure spirituality. Yes, mind. Very nice. Increase prana, sadhana, sankalp, sadhan, surrender. Vikalp, satsang, surrender, and yes, attitude. Very good. Being in the company of Guru, sadhaks, increases sankalpa and knowledge, and yes, attitude. Yeah. Satsang is which builds trust. Yes, absolutely. Doubts weaken when you, doubts will weaken your sankalpa, but doubts will weaken if you have high prana. Knowledge to say yes, conscious decision. There is a difference between having a wish and having an intention. So prana is the root. Yeah. अगर आपके मन में नेगेटिव विचार आ रहे हैं ना, तो लो प्राणा की वजह से आ रहे हैं. आपके मन में अगर डाउट्स आ रहे हैं, लो प्राणा की वजह से आ रहे हैं. रिलेशनशिप में झगड़े हो रहे हैं, लो प्राणा की वजह से हो रहे हैं. प्राण शक्ति, I tell you, is the secret of a lot of things. Maintain a high prana. Those who have done the DSN program, who are in this session here, if you have experienced DSN के वो जो 3-4 दिन होते हैं, उसमें your prana is so high. If you have experienced that high prana, if you have done the DSN, type high in the chat. Those who have experienced that. Specifically in a DSN course, it becomes so obvious. High plus 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 plus. Yeah, really. Yogesh, keeping the prana high is part of the solution, an inseparable part of the solution. We are coming to the other points also. Super high prana, yeah. High fives. So that is why most people notice that after doing the DSN, they are able to be with their willpower. ऐसे लगता है कि मेरी विल पावर स्ट्रांग हो गई. कैसे विल पावर स्ट्रांग हो गई? क्योंकि संकल्प स्ट्रांग हो गए. संकल्प कैसे स्ट्रांग हो गए? क्योंकि कोई भी विकल्प आता है वो संकल्प को तोड़ नहीं पाता. क्यों? क्योंकि प्राणा हाई है. हाई प्राणा में विकल्प अगर आए भी तो भी वो ड्रॉप हो जाता है, सूखे पत्ते की तरह हो जाता है. Now the second aspect, sadhan. For achieving anything in the world, you need some resources. Sadhan means what? Resources. You could require human resources. You could require material resources. You could require, financial resources. You could require some intellectual capital. अलग-अलग तरह के resources required हैं. So the first question after having made a sankalpa, you have to ask yourself, do I have the resources? Now see,
द इंपॉर्टेंट थिंग वेयर पीपल गो रॉन्ग, देखो छोटे छोटे गोल्स लोग अचीव कर पाते हैं. How many of you want to know how to achieve? See, there are small goals you achieved. There are some big goals also you have achieved in your life. But now, how many of you really want to know how to achieve big goals? Type big in the chat. How to achieve big goals in life, the ones which seem little difficult, the ones which seem almost impossible. Type big in the chat. Excellent, great. अक्सर हमें क्या लगता है कि अगर मेरे पास रिसोर्सेस होंगे तो मैं ये गोल रख सकता हूं. तो व्यक्ति संकल्प करता ही नहीं ये सोच के कि आई डोंट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेस. फॉर्मूला उल्टा है. पहले संकल्प करो, रिसोर्सेस विल कम टू यू. देखो, आर्ट ऑफ लिविंग की शुरुआत पता है कैसे हुई थी? जब गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को पता चला कि कुछ 100, 125, 150 बच्चे जो जिनकी पूरी स्कूल कोई चलाता है, गांव के बच्चे जिनके पेरेंट्स अभी नहीं है उनके साथ, उनका जो मेन पर्सन है वो उनको वो स्कूल छोड़ के जा रहा है. तो कोई और चाहिए स्कूल को संभालने के लिए, नहीं तो स्कूल को बंद करना पड़ेगा. जब गुरुदेव को ये बात पता चली, गुरुदेव मेड द संकल्प, यस आई विल टेक केयर. Gurudev's relatives and the people who used to work, Gurudev was very young at that time. He was hardly 24 or 25 years old. And he used to just go and teach people meditation, you know. So they advised Gurudev, Gurudev, आप कैसे करोगे 150 kids, उनका खाना, उनका रहना, उनको पढ़ाना. Gurudev said, सब हो जाएगा. Resources will flow. And that is what exactly happened. Resources started flowing. You know, within a few days, 2 retired school teachers came to Gurudev and said, we got to know that you are going to take care of 150 kids. We have retired, but we have the energy and enthusiasm and the drive to do something for society. If you wish, we will teach these students everything. Gurudev said, okay, please join. A farmer came. He said, I got to know that you are taking care of these kids. मैं ये बैंगलोर छोड़ के कहीं दूसरे शहर जा रहा हूं और मेरा इतना सरप्लस क्रॉप हुआ है इस सीजन में कि ये सारा अनाज, अभी मेरे पास समय ही नहीं है, मैं इसको कैसे बेचूं, इसको ट्रांसपोर्ट कराऊं, उसमें और खर्चा हो जाएगा. इफ यू विश आई विल डोनेट दिस फॉर योर स्कूल. अगले 1-2 साल के लिए आपके बच्चों को कोई खाने का इश्यू ही नहीं होगा. गुरुदेव सेड ओके यस वेलकम. ऐसे करते करते एक रिसोर्सेस, आज वो स्कूल बैंगलोर डिस्ट्रिक्ट की वन ऑफ द टॉप 10 परफॉर्मिंग स्कूल्स हैं. एंड दैट वाज द एक्चुअल बिगिनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद प्रॉपर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन बना आर्ट ऑफ लिविंग. व्यक्ति विकास केंद्र, वेद विज्ञान महाविद्यापीठ, ये सब बाद में बने. But it started with a yes, it started with a sankalpa, I will do it. So please understand one thing. First is sankalpa, then is sadhan. If you think, do I have all the sadhan samagri? Do I have all the resources? Then I will decide. It is never going to happen. It is never going to happen. You have no idea how nature or God or divine or that universal force is, how powerful that is and how it supports noble intentions. आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, people will come to you. Third point. अच्छा, ये पॉइंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. हमारे कैपेबिलिटीज को, कैपेबिलिटी इज पार्ट ऑफ साधन.
कि मेरी कैपेबिलिटीज क्या है या मेरे टीम की कैपेबिलिटीज क्या है, राइट? हमारे कैपेबिलिटीज हमको रियली पता है क्या? थिंक अबाउट दिस. Do you really know what your capabilities? Now I will tell you one thing. As a school going kid, I used to attempt to sing sometimes, and I used to miserably fail. And my brother, who is a professional singer now, Harshal, he used to sing well. तो especially जब आप कुछ attempt करते हो और दूसरा बहुत घर में ही कोई होता है जो आपसे बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, तो क्या हो जाता है, ये एक बहुत बड़ा डीमोटिवेशन हो जाता है. बिकॉज जो भी घर पे आते थे, जब मेरे भाई को सुनते थे, मुझे बोलते थे भाई गा रहे ना, यू नो, सुनो 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 गा रहा है, सुनो चुप बैठो, यू नो. तो मैंने ना सिंगिंग मतलब मेरे लाइफ से ये चैप्टर क्लोज कर दिया था. जब भी फिर कॉलेज में थोड़े से अटेम्प्ट किए, बहुत बुरा हाल हो गया. इन माय सेशन ऑन ह्यूमिलिएशन आई हैड शेयर्ड व्हाट हैड हैपेंड इन माय कॉलेज लाइफ व्हेन आई वेंट ऑन स्टेज एंड ट्राइड टू सिंग. बड़ा वो एक हादसा बन गया था मेरे जीवन का. After I attended Art of Living programs and I started going for follow-ups and satsangs, तो सत्संग में तो सब लोग ताली बजा बजा के गाते रहते, तो हम गाते रहते थे, you know. लेकिन फिर maybe in some seed form something was there, or the grace of the master, and because I was doing Sudarshan Kriya, Padma Sadhana, Sahaj every day, I used to participate in seva activities, you know. So when you are doing good things happen to you. Simple. मुझे पता नहीं चला मेरा सिंगिंग इंप्रूव हो रहा था. एंड व्हेन पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी टू देयर हाउस, हमारे घर में सत्संग रखा है, आप आओगे क्या? बोलता था हाँ मैं आऊंगा ना. फिर मैं जाता था, बोलते हाँ गाओ. बोले अरे क्या आपने मुझे गाने के लिए बुलाया है? मुझे लगा आपने मुझे जस्ट बुलाया है आपके घर में सत्संग करके. But then I realized that I have started singing a little bit. And one interesting thing that happened was when I got a phone call from the Art of Living Mumbai office. I still remember, मेरे ऑफिस के फोन पे फोन आया था. गुरु पूर्णिमा है अगले हफ्ते, वेडनेसडे को. आई रिमेम्बर इट वाज अ वीकडे, वेडनेसडे, क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं थी ऑफिस से. सत्संग होगा तो आपको आना है. मैं बोला ऑफ कोर्स मैं आऊंगा. गुरु पूर्णिमा का सत्संग साल में एक बार होता है, मैं क्यों मिस करूंगा? वो बोले नहीं आप समझे नहीं, आपको सत्संग के लिए आना है. मैं बोला हाँ मैं सत्संग के लिए आऊंगा. बोले आप अभी भी समझे नहीं, आपको सत्संग करवाने के लिए आना है. मैंने बोला क्या गुरु पूर्णिमा के दिन तो 3-4 हजार लोग आते होंगे ना? बोले हाँ 3-4 हजार लोग आएंगे, 5,000 भी आ सकते हैं. तो मैं बोला तो आप किससे बात करना चाहते हैं? वो बोले हाँ हम सलील से बात करना चाहते हैं. नहीं कोई गलत सलील से बात कर रहे हो आप. मैं गाता नहीं हूँ, मैंने बोला. तो बोले, मुझे अभी ये लाइन पूरी वर्ड टू वर्ड याद है. वो बोले आई डोंट नो हु दैट पर्सन वाज, आई हैव फॉरगॉटन. आई थिंक इट वाज अनिल जी और सम संतोष जी और समबडी. He said हमको रिपोर्ट्स मिले हैं, क्योंकि ये वर्ड एकदम बैठ गया दिमाग में, रिपोर्ट्स. हमको रिपोर्ट्स मिले हैं कि आप अच्छा गाते हो. तब मुझे पता चला कि भाई आर्ट ऑफ लिविंग में कुछ जासूस होते हैं जो रिपोर्ट्स देते रहते हैं ऑफिस में कि कौन अच्छा गाता है कौन नहीं. बोले नहीं आपको कुछ गलत रिपोर्ट मिला होगा. देखिए अभी टाइम वेस्ट मत कीजिए, वेडनेसडे को सत्संग है, आपको आके गाना है, आप गाइए. बोला ओके, जय गुरुदेव. And this is a weird story of my life actually. मंडे को मुझे सोर थ्रोट हो गया और ऑफिस में एसी में बैठे बैठे वो गला और खराब हो रहा था. ट्यूसडे को गला और खराब हो गया और वेडनेसडे शाम तक वो और खराब हो चुका था. और मैंने सब कुछ किया, विक्स, फॉल्स, कंठिल, हनी, अदरक का रस, हल्दी, एवरीथिंग आई ट्राइड, नथिंग वर्क. आई रीच्ड वेडनेसडे इवनिंग, माय थ्रोट वाज हॉरिबल. आई वेंट एंड सैट ऑन स्टेज. One boy came and he was wearing a, मैं तो ऑफिस के कपड़ों में गया था, ऑफिस से डायरेक्ट गया था वहां पे. I was working in a multinational IT company in Seeps in Mumbai. तो मैं तो पहुंच गया वहां पे मेरे ऑफिस के कपड़ों में. एक लड़का आया, व्हाइट कुर्ता, व्हाइट पैजामा और लंबे बाल थे उसके. वो स्टेज पे बैठा, उसने बोला मैं गा सकता हूँ क्या? मैंने हैप्पीली, इतनी खुशी से मेरे हाथ पे जो माइक था उसको दे दिया. भाई गा यार तू, मुझे बचा. और उसने ओम नमः शिवाय गाना शुरू किया. उस टाइम पे आर्ट ऑफ लिविंग सत्संग यूज्ड टू स्टार्ट विद ओम नमः शिवाय, शिवा भजन फर्स्ट. नाउ गुरुदेव चेंज्ड द फॉर्मेट, इट इज गणेश भजन फर्स्ट. बट इन दोस टाइम्स इन द 90s it used to be Shiva and then Vasudevai and then Guru and then everything else.
शिवा भजन गा दिया इन्होंने, शिवा भजन इन्होंने गा दिया, और फिर he started giving the mic back to me. So I just indicated to him, आप चालू रखो। और अभी तक 1000-1500 लोग आ गए थे, और मैं देखा था हॉल भरते जा रहे हैं। फिर one lady came and she requested, people are asking me because I was the officially appointed singer of the satsang, so they were asking my permission, but मुझे लग रहा था ये मुझे क्यों पूछ रहे हैं, अरे भाई तुमको गाना है तुम गाओ ना। तो इनको भी एक शिवा भजन गाना था, तो इन्होंने मराठी भजन गाया, हे भोळ्या शंकरा, गा दिया। वो बड़ा लंबा भजन है, चलते जाता है चलते जाता है, और मैं इतना खुश हो रहा था, भाई चलने दो चलने दो। फिर उन्होंने भी माइक मुझे दे दिया, अब माइक मेरे हाथ में आ चुका था, नाउ आई हैड टू सिंग। गुरु पूर्णिमा का सेलिब्रेशन था, तो जस्ट गुरु पूजा हुई थी, गुरुदेव का एक बड़ा फोटोग्राफ था वहां पे। सो आई लुक्ड एट दैट फोटोग्राफ एंड आई सेड, गुरुदेव देखो, अभी माइक मेरे हाथ में है, अभी मैं गाने वाला हूं, ये लोग क्या सुनेंगे ना, ये आपके हाथ में, मैं इस स्टेट में अभी गाने जा रहा हूं, तो आप देख लो। I started singing. I remember I had sang Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So I sang. उसमें एक ही लाइन ओम नमो भगवते वासुदेवाय 3 या 4 अलग अलग ट्यून्स में गाई जाती है। तो मुझे पता था व्हेन आई सिंग इट फॉर द थर्ड और फोर्थ ट्यून, क्योंकि मैं 3 लाइन बोलता था और चौथे लाइन पे मैं खांसता था। ये 3 दिन से ये चल रहा था कार्यक्रम। थर्ड सेंटेंस और फोर्थ सेंटेंस आई वुड स्टार्ट कॉफिंग वेरी बैडली। तो आई वाज होल्डिंग द माइक लाइक दिस, and by this time there were 2,500 to 3,000 people in the hall, and I was keeping my other hand like this on my throat, कि अगर खांसी आई तो मैं उसको दबा दूंगा। So I sang Om Namo Bhagavate Vasudevaya, first tune over, second tune over, third tune over, fourth tune also over, खांसी अभी तक नहीं आई थी, and then the same repeats again, 1 2 3 4. So I sang it again, nothing happened. I sang it again, nothing happened. And the last 3 days there was a severe pain in my throat, and suddenly I realized by the time I was singing for the third or fourth time, ये पेन अभी हो नहीं रहा है, and खांसी अभी तक आई नहीं है। पूरा भजन मैंने फिनिश किया and nothing happened. I kept the mic down and I felt ये क्या हुआ। I took the mic again, अब थोड़ी सी हिम्मत आ गई थी। Then I sang the Guru Bhajan. And while I was singing the Guru Bhajan, when I opened my eyes, I saw that, एक वो होता है ना सत्संग में, people want to dance because there is a celebration. So they get up, they open their eyes, और वो कुछ हल्ला गुल्ला करते हैं, नाचते हैं। और एक वो होता है जब सत्संग में लोग इतना खो जाते हैं और अपने आप वो बॉडी स्वे होने लगती है। That is when the mind has dissolved. I'm sure you have had that experience in satsang. One is when you want to celebrate and jump and do everything, and one is when you have lost yourself. I saw that wo 2,500 में से at least more than half the audience was just so dissolved, and the body is just swaying like that on the bhajan. And मैं सोच रहा हूँ कि ये मैं गा रहा हूँ, मैं बात नहीं कर पा रहा था 3 दिन से, और मैं अभी गा रहा हूँ और लोगों को अच्छा लग रहा है। People are having a deep experience in the satsang. And I sang 8 bhajans back to back. And at the end of the satsang, people started coming to me. And I remember there was a young group of boys and girls who came to me. They took out their, tabhi mobile phones popular nahi the itne. I'm talking about 99 or 2000. है ना? तो पेपर और पेन लेके सर आपके क्लासेस का एड्रेस चाहिए। बोला कौन से क्लासेस? बोला आपके सिंगिंग क्लासेस का एड्रेस। बोला नहीं, मैं कोई सिंगिंग क्लास नहीं जाता, या ऐसे ही सत्संग में। नहीं, आप जहाँ सिंगिंग आप सिखाते होंगे ना सिंगिंग। बोला नहीं, मैं कहाँ सिंगिंग सिखा। बोले नहीं सर प्लीज देखो ना, मतलब वी वुड रियली वांट टू लर्न। मैंने बोला सी इफ यू वांट टू रियली लर्न देन नेवर लर्न फ्रॉम मी। This is what I remember. This is the line I told them. If you really want to learn singing, never learn from me, because I have never learned and nor can I teach. And I just got off the stage. एक तो कुछ लोग पैर छूने लग गए. I was feeling very embarrassed. I was not an art of living teacher. I was not used to people touching my feet, and I just went away from there. But that was the day I realized we have no idea of what sadhan we have with us, of what our capabilities are.
And if your intention is noble, and the fifth point, intention, sankalpa, and the fifth point, samarpan, then fourth point, सही समय पे सही चीजें होने लगती है, अपने आप होने लगती है. The mind can never explain how that happens. So that satsang was the turning point for me, which gave me the confidence that yes, I can sing on stage, not just in a house of 10-15 people. I can sing on stage with an audience of 3,000 to 5,000 people, with musicians, mic systems. इसके पहले माइक सिस्टम लेके कभी सत्संग नहीं किया था लाइफ में, क्योंकि हम तो घर में ही 15-20 लोग के साथ ही करते थे. So it was a big revelation for me that I have no estimate of what my capability is. Are you getting this? हमको लगता है ना कि हमारे पास ये अवेलेबल है. You have no idea तुम्हारे पास क्या क्या अवेलेबल है. तुम करने जा रहे हो क्या? तुम्हारा सी, and you know this was also Guru's blessing. मेरे मन में एक बार भी ये डाउट नहीं आया कि मैं ऑर्गेनाइजर्स को बोलूं कि सी माय थ्रोट इज बैड, आई कैन नॉट सिंग. ये नो आया नहीं मेरे दिमाग में. मैं बात नहीं कर पा रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि इन्होंने मेरे पे इतना विश्वास रखा है, आई हैव टू डू माय बेस्ट. सो जो भी है वो मैं कर लूंगा अपने साइड से. जो होना है वो गुरु देख लेंगे. See, this is the meaning of Samarpan. Samarpan is of the result. Samarpan is never of the action. Are you getting this? Very, very clear to, very, very important to understand this. Surrender. Surrender what? You are not supposed to surrender your effort. Effort is necessary. All the scriptures have given prime importance to effort. Yoga Vasishtha, Purushartha, your effort. Shiva Sutra, Udyamo Bhairava, your effort. Bhagavad Gita, karma, your effort. Effort is not to be surrendered. Outcome is to be surrendered. So this is what exactly I did. Unconsciously ये हो गया तभी. ऐसा नहीं था कि मेरे पास ये नॉलेज है, बट हो गया ऐसे. तो वो प्रेयर, गुरुदेव आप देखो सत्संग का क्या होना है, मैं गा रहा हूं. First time it was for me, first time. तो जिसको सिंगिंग नहीं आता है, जिसने कभी स्टेज पे माइक के साथ म्यूजिशियंस के साथ गाया नहीं, और जिसका 3 दिन से पूरा गला खराब है कि जो बात नहीं कर सकता, अगर वो 3-4 हजार लोगों के सामने सत्संग करके लोगों को रियली उस सत्संग का अनुभव मिल सकता है, तो फिर हाउ कैन वी देन जज आवर कैपेबिलिटीज? टेल मी. So that's the second point, sadhan, right? Third point, skill. Whatever your effort you are putting, you have to put it in a skillful way. One is effort. मेहनत करो, लेकिन स्किलफुली मेहनत करो. जहां मेहनत की जरूरत नहीं है वहां मेहनत क्यों करनी है? अभी आपको किसी को मैसेज भेजना है तो आप व्हाट्सएप पे भेज दोगे. आप लेटर लिख के पोस्ट करते हो क्या? 4 दिन के बाद मिलेगा ना मैसेज, राइट? सो व्हाट इज स्किल? स्किल is something which will allow you to achieve more in less. That is skill. इसके लिए भगवान कृष्णा टेल्स अर्जुना, योगा कर्मसु कौशलम. व्हाट इज योगा? जो आपके एफर्ट्स को स्किलफुल बनाएगा. दैट इज व्हाट. Now see, in the DSN program when people do the Padma Sadhana, and I tell you DSN में Padma Sadhana कुछ अलग बात होती है. Generally Padma Sadhana का वीडियो अवेलेबल है YouTube पे. You can just play that and do Padma Sadhana. आपको वो मैजिक अनुभव नहीं होगा जब आप DSN में जब पद्म साधना करते हो ना, उससे जो स्किल्स ग्रो होने लगती है आपके लाइफ में, वो स्किल मैजिकल है. तो द डेप्थ ऑफ योर साधना, व्हेन योर साधना इज रियली डीप and is powered by the grace, that really enhances your skills at such a fast pace
I could have never have imagined that, I will conduct satsang. And after that, I've conducted satsang for bigger audiences than 5,000 people also. Then the fourth point, समय. अब इसके दो dimensions हैं. One is समय in the terms of availability of time management. And another is doing things at the right time. लोग बोलते हैं शायद मेरा समय नहीं आया. आपको कैसे पता आपका समय आया है कि नहीं आया? गुरुदेव का बुलावा आएंगे तब हम पहुंचेंगे ऋषिकेश. आपको कैसे पता कि गुरुजी ने आपको बुलाया नहीं है? गुरुजी क्या आपको व्हाट्सएप भेजेंगे स्माइलीज के साथ, हे आई एम मिसिंग यू प्लीज कम. लोग ये बोलते हैं गुरुदेव का बुलावा जब आएगा तब हम करेंगे डीएसएन एडवांस. अरे तुमको कैसे पता उनका बुलावा नहीं आया है? तुमको कैसे पता तुम्हारा समय आया है कि नहीं आया है? जब तुम तुम्हारी तरफ से पूरा एफर्ट डालोगे तभी पता चलेगा तुमको कि तुम्हारा समय आया है कि नहीं आया है. पूरा एफर्ट डालने के बाद भी अगर तुम कहीं नहीं पहुंचते, देन यू कैन से कि शायद मेरा समय नहीं आया था. लेकिन करने के पहले आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा समय शायद नहीं आया है. नहीं आया था इज ओके. दैट ऑल्सो कुड बी अ जस्टिफिकेशन ऑफ लैक ऑफ एफर्ट. आर यू गेटिंग दिस? सो यू पुट योर एफर्ट, समय. एंड when your meditation is deep, your intuition will tell you what is the right time for doing what in life. Suppose you are thinking, I think I should shift from Bangalore to Kolkata. और आप कंफ्यूज हो रहे हो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए. Oh, I think I should go abroad for 5 years and come back. I think I should start my business. But what is the right time for starting my business? जॉब तो मैं 2-4 साल 5 साल से कर रहा हूँ. What is the right time to start my business? ये सही समय कैसे पता चलता है? Logically, you can prove yes, you can prove no. Logically, 1,000 people can give you 1,000 logical reasons why you should start business, and another 1,000 can give you 1,000 logical reasons why you should stick to job. Intuition begins where logic ends. What is intuition? Gurudev gave such a beautiful definition of intuition. The tuition which you get from inside is intuition. The tuition which you get from inside is intuition. And how will you get the tuition from inside? If you go inside. When your meditations go deeper, then you will start getting your intuitive voice. तब वो सुनाई देने लगेगा. So again, I come back to the power of Padma Sadhana. Padma Sadhana आप करते रहोगे, और जैसे वो DSN में हम experience करते हैं, the power of Sudarshan Kriya which you are anyway doing every day, the power of the meditation which you are anyway doing every day, that enhances. It goes much levels deeper. And then the fifth point, Samarpan. So which you already discussed. Samarpan is of what? Samarpan is of the outcome, not of your efforts. Right? So Vivek, quickly we show them the 2 slides. So just to get a recap of what we discussed. So the 5 points. First point is Sankalp. Yeah, and then Sankalp का one aspect, beware of the doubts. संकल्प को कमजोर क्या करेगा? डाउट्स कमजोर करेंगे, राइट? और डाउट्स ज्यादा कब आएंगे? जब प्राण शक्ति लो हो जाएगी. तो प्राण शक्ति को हाई रखो. इसके लिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हर एक सेशन में DSN 2 साल में एक बार करना जरूरी है. Those people here who have done the DSN earlier, if you have not done it in the last 2 years, and nobody has done the last 2 because हुआ ही नहीं है last 2 years में. Okay, if you have not done it in the last 2 years, you must do it again now, very soon. So April 14th is a good option. If you want, you can join that. Okay. Sadhan में you have to expand your capabilities. अगर आप आपकी capability को limit करोगे,
तो ये पॉइंट में आप कमजोर हो जाओगे साधन में. And know that the sadhan will flow to you. Resources will flow to you if your sankalpa is strong. Third point, skill. Yoga karmasu kaushalam. So this comes from your sadhana, right? Samay. Intuition will tell you what is the right time for what decision of your life. Whatever it may be. And the fifth, samarpan. So samarpan, पूरा let go. ये let go करने के लिए श्रद्धा चाहिए, faith चाहिए. And मतलब ये पांचों point जो है ना, DSN is a total combination of these 5 points. Your willpower shoots up because your sankalpas become strong. Your capabilities expand in the DSN. How to make intuition stronger? By taking your meditation deeper, right? Meditation deepens when certain processes, are happening properly in your whole system, your body, mind, spirit complex. That is where Padma Sadhana helps a lot. Skill, yoga, karmasu kaushalam, the sadhana. Samay, intuition, that develops with meditation. And samarpan, faith. When you get a taste of doing impossible things in those 4 days of the DSN, आप इतनी impossible चीजें, जो चीजें आपने आज तक कभी लाइफ में की नहीं, वो जब करोगे ना, it's a very dynamic course. That's why course का नाम ही है DSN, Dynamism for Self and Nation. Why nation? आपको क्या लगता है आप नेशन के लिए कुछ नहीं कर सकते? मैं बोल रहा हूं, you are extremely powerful. You don't know how powerful you are. You can make a difference to the nation. Now see what this today. I'm just half an hour back, not half an hour back, half an hour before the session started. 4 o'clock I came back watching Kashmir Files. Such a bold movie. Vivek Ranjan Agnihotri, I mean, hats off to that person. इतना bold truth उन्होंने मूवी के जरिए करोड़ों लोगों के सामने रखा है. तो ये जो कैपेबिलिटी है ना, ऐसा कुछ, मतलब देखो, एक व्यक्ति के संकल्प के वजह से करोड़ों लोगों को इतना कुछ पता चला, इतिहास पता चला. So don't think you are insignificant. Don't think you are small. Don't think आपका impact देश पे नहीं हो सकता. आपका impact देश पे जरूर हो सकता है. But you have to believe. Another very brilliant answer given by Baba. Baba actually, I was so lucky. I got the mentoring directly from Baba for many years, in my life. One of the questions which Baba answered very beautifully. I had organized that Art of Living course, and the question asked was, why is America a superpower? And Baba said, because Americans think they are. Because Americans think they are. They think they are a superpower. That's why they are a superpower. If you think you are weak, you are weak. If you think you are strong, you are strong. If you think you are capable, you are capable. तो ये जो है ना, our thoughts are extremely powerful. Yes, sankalpa is just a thought that this particular goal I have to achieve. Yeah. I feel faith is not concrete, it is abstract. How to understand and instill faith, please guide. No, there is no really logical instill faith के बारे में तो नहीं. Faith को आप nurture कर सकते हैं, संकल्प को भी nurture कर सकते हैं, but faith is not something which can be explained logically. Because what can be explained logically can be thrashed also with some other logic. Like we can say, अभी तो दिन है. Everybody agrees, अभी दिन है. It's daytime now. But अगर कोई बोलता है अभी रात है, अमेरिका में रात है ना. There is another logic. दिन है ये भी प्रूव कर सकते हैं, रात है ये भी प्रूव कर सकते हैं. Two different logics, right? So faith is that which is faith transcends logic. Correct? Faith is only experienced. You are what you think. Yes. Jaisi drishti, vaisi srishti. Our rishis have said this.
how to change this thought process even when we are not getting desired results. See, again and again you have to allow yourself to get into the environment of a high, वो हाई वोल्टेज केबल्स होते हैं ना, बड़े बड़े टावर्स होते हैं, तो उससे हम दूर ही रहते हैं क्योंकि उसकी बहुत हाई वोल्टेज होती है. तो हाई वोल्टेज ग्रेस के एनवायरनमेंट में जब बार बार तुम जाते रहोगे ना, तो ये सारा फाइन ट्यूनिंग होने लगता है. संकल्पा इक्वल टू इंटेंशन, दैट परफेक्ट. भैया, हाउ टू नो इफ यू आर गिविंग 100%? नो, दैट यू विल नेवर नो. यू जस्ट लगे रहो बस, उसका कोई लिमिट नहीं है ना. देयर इज ऑलवेज अ लिटिल मोर दैट यू कैन, राइट. वो कभी पूरा नहीं होता. तो ये पांचों का कॉम्बिनेशन इज डीएसएन. संकल्प, साधन, स्किल, समय, समर्पण. ये पांचों फैक्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं एज यू डू द डीएसएन. एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड डू इट once in 2 years. I'm not just telling you to come to Rishikesh on 14th of April. इसके बाद भी मैं डीएसएन सिखा रहा हूं या नहीं सिखा रहा हूं, keep doing the DSN program once in 2 years. Okay, now how many here who have not yet done the DSN? Just type not in the chat. Who have not yet done the DSN? And how many here and others, type the year in which you did the DSN: 2015, 2010, 2016, 2018, 2019. Just type the year in which you did the DSN. Okay, and after typing that, you can, anybody who has any questions, you can text. And also text what is your biggest takeaway from this session. If there is more than 1, 2 or 3, type that also. What is your biggest takeaway from this session? Work on these 5 points. Yeah, and the best way to work on these 5 points is do the DSN program, because it is a practical, it's a curated module for you to implement these 5 points and enhance those. It's Gurudev's design, so we don't need to reinvent anything else. Already the master has given us the ready-made गुलाब जामुन, उसको बनाने के कष्ट करने की जरूरत नहीं है. बिगेस्ट टेक अवे, नॉट टू गिव अप ऑन एफर्ट. यस, ओके, वेरी गुड. 5 points: unbeatable faith, take a sankalpa, sadhan will come. Very nice.